As has been the rituals at SMS Varanasi, that remarked journey of the fresh patches of different programs begin with the orientation program. I, Dr. Anju Singh, Assistant Professor on behalf of School of Management Sciences Varanasi, an autonomous college and NAC A-grade accredited institution, feel privileged and honored to stand before you and accord a hearty and cordial welcome to the inaugural session of the orientation program to respected chief guest of the program, Professor H.K. Singh, Dean and Head Faculty of Commerce, Banaras Hindu University, Varanasi. Our first guest of honor, Mr. Rajesh Bhatia, National Secretary, Indian Industry Association and President, Small Industry Association, Varanasi. Our second guest of honor, C. Sudeshna Basuch, Chartered Accountant and Partner, S. Chaudhary and Associates, Varanasi. Respected Director of the Institute, Professor P. N. Jha, Registrar of the Institute, Mr. Sanjay Gupta ji, Professor Rajkumar Singh, Head of Commerce Department, SMS Varanasi, Dr. Anju Singh, Coordinator, MCOM Program, Dr. V. Pratap Singh, Coordinator, BCom Honours Program, Dr. Ishan Tripathi, Coordinator, BA Honours Mass Communication Program, faculty colleague and new interns to the inaugural session of the two-day orientation program of MCOM, BCom Honours and BA Honours Mass Communication courses for the session 2025-26. Welcome everyone. Today's mark not just the beginning of an academic journey, but also the blossoming of new aspirations, dreams and opportunities. To seek the divine blessing, let us commence our inaugural session with the lighting of lamp and garlanding of the statue of Goddess Saraswati, the embodiment of knowledge and wisdom. For seeking the choicest blessing with deep reverence, I now request Chief Guest Professor H.K. Singh sir, Guest of Honor Mr. Rajesh Bhatia ji, Guest of Honor C. Sudeshna Basu ma'am, Director Professor P. N. Jha sir, Registrar Mr. Sanjay Gupta sir, HOD Commerce Department Professor Rajkumar Singh, and coordinators of different programs to garland the statue of Goddess Saraswati and kindle the lamp of knowledge. So please.
Thank you everyone. I humbly request our Chief Guest, Professor H.K. Singh sir, Guest of Honor Mr. Rajesh Bhatia ji, Guest of Honor Sri Sudeshna Basu ma'am, Director Professor E.N. Jha sir, HOD Commerce Department Professor Rajkumar Singh sir, to kindly grace the dais with their presence. Sir, please. I would now request the Registrar of the Institute, Mr. Sanjay Gupta ji, to welcome our Chief Guest, Professor H.K. Singh sir, by presenting a bouquet as a token of love and respect. Dr. V. Pratap Singh, Coordinator, Become Honors Program, to welcome our first guest of honor, Mr. Rajesh Bhatia ji, National Secretary, Indian Institute of Association and President, Small Industry Association, Varanasi, by presenting him a bouquet as a token of love and respect. Thank you so much, sir. I would now like to invite Dr. Ishan Tripathi, Coordinator, BA Honors Mass Communication Program, to welcome our second guest of honor, Sri Sudeshna Basu, Chartered Accountant and Partner, S. Chaudhary and Mrs. Joy Swami, by presenting a bouquet. Thank you, sir. As you all know that today we have gathered here to welcome the new students who are about to begin their journey in order to achieve their goals and lead a successful life. It is great honor and privilege for me to invite a great motivator and a visionary, Honorable Director of the Institute, Professor V.N. Jha sir, for the welcome address. So please. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते सिद्धे साध्य सदा मस्त प्रसादा तस्य धूर्जटे जाह्नवी फेन लेखेव यन मूर्धनि शशिनः कलः सर्वा बाधा प्रशमन त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मद्वैर विनाशनम्. Honorable Chief Guest of the program, Professor H.K. Singh, Head and Dean, Faculty of Commerce, Banaras Hindu University, venerated guest of honor, Mr. Rajesh Bhatia, National Secretary, Indian Industry Association and President, Small Industry Association, Varanasi, Chartered Accountant Sudeshna Basu, Madam, Chartered Accountant, Varanasi, my colleague and Head of Department of Commerce, Professor Rajkumar Singh, my colleague and Registrar, Mr. Sanjay Gupta, Course Coordinator of Comm program, Dr. Anju Singh,
Course Coordinator of Comm Honors Program, Dr. V. Pratap, and Co-Coordinator, Dr. Shishir Gujarati, Course Coordinator of B Honors Mass Communication Program, Dr. Ishan Tripathi, my other respected academic colleagues, and my very dear newly admitted students in these courses. It is indeed a memorable, exuberant occasion and a landmark day in the honors of SMS Varanasi that these newest stars in our SMS firmament, they are going to embark upon their new academic journey in the blissful presence of both academic and industry titans who are going to flag off their peregrination today. At the auspicious occasion, I take this opportunity to extend a warm welcome to all of you. This is a very great day for you, friends, my dear students. A very important and a major inflection point in your career. It is the beginning of a great cerebral pursuit for you with the orientation program. Friends, orientation is basically a program of collegiate socialization where the newly admitted students are brought more and more proximal to all the various cohorts of the internal environment of the institution, with which they are expected to be face to face during their entire curricular stay over here. So far as your institution is concerned, SMS Varanasi was established in 1995, and it was the privilege of the institution that it got the academic care of some of the very renowned and acclaimed professors of that time in view of its grooming and nurturing. And that's why the institution could attain the grit to capture the core value of quality in the underpinnings of its very foundation in order to pioneer the spread of professional education in this part of the country as a private entity as per the true spirit of the higher education. Today, your institution, as has been told you earlier, is an A-graded institution which has also attracted autonomy from the UTC just 3 years back. And the institution also attains a very prestigious position on the continuum of top 50 B schools of India. From any stretch of imagination, if you see, you'll find that your institution has been nurturing the academic and intellectual strivings, co- and extracurricular activities, outreach initiatives, and civic engagement of a very high order. The institution was a premier one to have given attention towards the overall personality development of not only students but all the stakeholders, with the establishment of a Center of Spiritualism and Human Enrichment, CSHE, as early as 2001 only, with the august hands of the then Governor of UP, Pandit Vishnukant Sastri. And that's why
Here, not only professionalism, but humanism and social responsibility also become the part and parcel of the environment of your institution. With the help of a very dedicated and ebullient team of the brilliant and seasoned faculty members of SMS, we promise you to provide you one of the best learning experience. Friends, so far as your curriculum and your syllabus is concerned, you might be knowing that we have already received the National Education Policy 2020 just few years back. And after a hiatus of about 34 years, earlier we had the National Education Policy in the regime of late Rajiv Gandhi, the Prime Minister of India. And today, under the regime of our Prime Minister Sri Narendra Modi ji, we have got this National Education Policy, which is certainly a very comprehensive educational plan to overhaul India's education system. For the first time, we have got an education policy which brings us a very clear picture on the expectations from education. It says that education is fundamental for achieving full human potential, developing an equitable and just society, and promoting the national development. So this kind of vision of the NEP is to be fulfilled by you people only. This is the message of the NEP. Now, according to this NEP, which aims to align education with employment and making it more holistic, more inclusive, more multidisciplinary, and at par with global standards, your curricula and syllabi have been designed. I am sure that not only domain knowledge, but also the development of your skills and the enhancement of your abilities would be the resultant when you follow this curricula. Friends, this course that you have taken, I think, would be more and more compatible to the demand of your generation also. Because you all belong to Generation Z, it is a change generation. And it is a bit unique from the persons of other generations like silent generation or baby boomers or Generation X or millennials or Generation Y. The people of Generation Z, your generation, they always want to feel as if they are making a positive difference in the world through their work. They do not see the same artificial dichotomy between their personal lives and the work lives. They also do not simply think to become a good human citizen on one hand and then go to work on the other hand. They are expected to carry some special agenda in their mind. They want to make certain impact, certain social impact. And for that, this course would be very, very compatible. These courses are likely, but more likely to provide you a very effective springboard to launch you to the social impact making career. Now, it is up to you that how far you come forward to accept the vision of the National Education Policy through your curriculum, through the guidelines provided by your course coordinators and the teachers. If you come forward enthusiastically, if you pay full attention, if you come to the classes regularly, I am sure that you will certainly be in a position to reap more and more dividend, more and more return on this investment made by your parents. Otherwise, no. Otherwise,
For the consequences, you will have to ready for all kinds of the failures and all kinds of ill consequences if you do not do it. So friends, I would like to tell you that come to the classes daily. It is a must, and observe full discipline. Apart from the domain knowledge, I would also suggest you that you have to take care of your skill development equally, because only having the degree of M.Com or B.Com honors or B honors mass communication is not enough. It cannot ensure you a certainty in terms of employment for all this. For that, you have to supplement yourself with certain skills, because you know that India, our country, has been the house of the largest and youngest workforce. And today, we have been facing a daunting challenge, skilling these vast workforce. And there has been a very important and very significant gap existing between the knowledge and the skill and the requirements of the corporate sector, the job market. Because a recent study conducted by Box, it is a skill assessment company, it has involved about 4 lakh students, college graduates, and found that only 51.2% are employable. Even our NSDC, National Skill Development Corporation, reveals that while India wants 103 million skilled workers, presently we have only 74 million. So this way you can understand that what is the disconnect existing between the education and the requirement of the job market. So this gap you have to bridge. I am sure that you will certainly come out with flying colors. As your principal or director, I extend my heartiest blessings to all of you and wish this program a humongous success. Thank you very much. So much, sir, for the thought-provoking speech. Preamble is an introductory statement that consists of a mission statement, a vision, and the objectives. And to brief us all about the preamble of SMS, I now invite Dr. Shruti Singh, Assistant Professor, SMS Varanasi, for presenting the preamble of SMS Varanasi. Thank you. Thank you so much, ma'am. A very good morning to all the honored dignitaries, esteemed members of the academic and administrative community, and our newly joined students of BCom Honors, MCom, BA Honors, Mass Communication. I am Dr. Shruti Singh, Assistant Professor at School of Management Sciences, Varanasi, and it is my privilege today to welcome you into the fold of School of Management, Varanasi. Students, you are stepping into an institution that over past 30 years has shaped thousands of learners into professionals, leaders and thinkers who have carried the ethos of SMS worldwide. What makes this journey unique is that SMS has never seen education as just the transfer of knowledge. For us, education is about cultivating excellence, instilling ethics, and inspiring innovation. This philosophy is very well preserved in what we call the preamble of School of Management Sciences, Varanasi, a 4-pillar framework that guides our growth, namely vision statement, mission statement, quality policy, and the guiding values. Let us explore how each of these pillars will guide your journey here. To begin with, vision is our horizon, the place we are moving towards, defining the long-term aspiration of our institution. Our vision statement is to become a constantly growing center of excellence, nurturing global-centric professional leadership based on ethical and moral standards. The uniqueness of this vision lies in the balance. It combines the rigor of both professionalism and the strength of ethics and moral standards.
As said by Gautam Buddha, Charayavati Charayavati, meaning don't stop, go on, go on. So do we believe the importance of constant growth. School of Management Sciences believes in this eternal philosophy of life and growth. Our vision also concentrates on the center of excellence, that is positioning SMS as a benchmark institution for quality education and institutional innovation. Excellence may mean different to different individuals, but it is defined as superiority, the quality or the state of being outstanding and superior. And our objective at SMS is to stand out, outshine, outclass, surpass, outrival, and outdo. SMS shall always strive and remain in competition with itself and shall be the best benchmark organization. As far as global professional leadership is concerned, SMS believes in preparing our students to be adaptive, proactive, and capable of contributing across international contexts. SMS believes that the future professionals are already here. To undertake this journey, one must be mindful of one step and stay focused on the map. At SMS, we also believe in ethical and moral attributes, affirming that professional leadership must always be grounded in integrity and values because leadership without integrity is fragile. We at SMS shall imbibe these values and attributes as mentioned in our scriptures and book of knowledge through our training methodologies, teaching approaches, and daily practices. Moving ahead, if vision is the horizon we see ahead, then mission is the path we walk through to reach it. Mission translates each and every vision into action. Our mission is the operational roadmap for realizing the vision statement. The mission statement of SMS is to create an excellent learning ambience through innovation in teaching, research and consultancy for producing professionals capable of answering global challenges and demonstrating high ethical and moral standards. SMS sets itself apart in many ways and emphasizes on following critical dimensions. First being the excellent learning ambience, ensuring that our classrooms and academic spaces foster collaboration, critical inquiry, and holistic development of our students. By fostering an ambience of learning that is collaborative and vibrant, where you, the learner, are at the center, we at SMS strive to maintain an atmosphere conducive to collaborative and cooperative learning. Next, most critical dimension in our mission statement is innovation in teaching, research, and consultancy, reflecting our readiness to adopt new methods, explore new knowledge domains, and engage with industry and society. By embracing innovation in pedagogy, research, and industry interface, SMS ensures it stays contemporary and relevant. It focuses on breaking traditions, by which we mean to say that we will not hesitate to break away from tradition or convention and go on uncharted waters to devise, design, and implement new methods. We shall continuously learn and grow and enrich our wisdom for the larger good, deriving strength and inspiration from ancient books of wisdom. Teachers and students, learners and trainers share a common purpose with the ultimate objective of being learner-centered. And at last, we at SMS promise to provide our expertise to society in appropriate areas to create health, happiness, and prosperity. This mission of learning is deeply rooted in India's intellectual traditions and resonates with the timeless wisdom of Kathopanishad, a prayer that symbolizes the essence of SMS Varanasi, where learning together, gaining strength together, and spreading peace together has been given special emphasis. But a roadmap without standards is incomplete. That is why we have our quality policy, which implies imparting value-based education of the highest standard relevant to the contemporary world. As you can see, our quality policy is both a promise and a practice. The uniqueness of this policy lies in its dual focus.
On one hand, value-based education has been given prime importance, ensuring that your academic growth is grounded in integrity, humility, and human values. On the other hand, we strive to maintain world-class standards aligning with the dynamic needs of industry and society so that our graduates are well prepared for the future. At SMS, quality is not an occasional achievement. It is an everyday discipline embedded in teaching, research, and institutional culture. Yes, what sustains quality and innovation together are the guiding values that shape how we live and learn together. Our guiding values define the uniqueness of SMS as a learning quality. They are trust, sense of ownership, sense of contribution, innovation, modesty, and mutual respect. Trust is given prime importance as it is the foundation of meaningful relationships within SMS. Sense of ownership reminds us that SMS belongs to all of us. Sense of contribution emphasizes the importance of collaborations and support in achieving success for the entire community. Innovation opens new possibilities for learning and growth at SMS, inspiring members to the creativity and embrace changes. Modesty and mutual respect ensures that success is always accompanied by humility and respect. These values define the foundation of our very own institutions. They are the invisible threads that connect our vision, mission, and equality policy, making them more than statements and making them lived realities. So dear students, as you begin your journey, think of preamble of SMS as a relational model and a living philosophy that will accompany you throughout your years here. May you embody these principles and contribute to the legacy of excellence that defines SMS. Welcome once again to the SMS family. Thank you so much. For making us new students aware with the mission, vision, and the objectives, and I'm sure they will incorporate the same. I would now like to invite Professor Rajkumar Singh, sir, Head of Commerce Department, SMS Varanasi, to provide us insights about MCOM, BCom Honors, and BA Honors Mass Communication Program. Sir, please. Thank you, madam. Good afternoon to all of you. Respected dignitaries on the dais, and my dear students. First, I would like to welcome you all in the SMS family. In our entire life, we have to do only two things. First, we have to take the right decision at the right time in the right manner. And second, we need to ensure whether our decision is being executed properly or not. So I would like to congratulate you once again because you have taken a right decision at the right time in the right manner to take admission in SMS Varanasi. See, our entire life is simply a journey. When we reach to a destination, the next phase of our journey starts. Remember the days of your schools, that journey has ended on. Now you are starting a new journey in the higher education. Then post-graduation, then corporate or other area of professional accomplishments. The journey will keep on going. But remember that philosophy of Charles Darwin, the survival of fittest. The survival of fittest will be only when he will continuously learn, unlearn, and relearn. You all are welcome because, as Dr. Sir has said,
your batch is the first batch who is going to be the part of NAP 2020 implementation. Means from your batch, the entire course curriculum which has been designed as per the NAP 2020 will be implemented. As you all know, being a student of commerce and mass communication, we are living in the era of Industry 4.2 and we are proceeding towards Industry 5.0. And this era is fundamentally, we call it a fourth industrial revolution, where the business is becoming smarter and smarter. Obviously, we have to adopt the education 4.0 because we have to meet all the needs of the industry. But why we are talking about the industry 5.0? Because apart from the technology, the human values should not be forgotten. So first you need to be a good human being. Rest things will be done automatically. And in this entire journey, SMS is with you. As Dr. Sir has mentioned, in the next 2 days, you are going to have a different sessions on what kind of infrastructure facility we are having, our library, our discipline, different aspects of the course curriculum, entrepreneurship, etc., etc. India is the youngest economy of the population of the world, youngest population. 60% populations are below 35 years of age. We call it a population dividend. But whether we are a population dividend or population liability, this all we have to decide. What Sir has mentioned, only 50%, around 51% people are employable. Then what about rest of 50%? We cannot say all these things in a negative way that all these 50% people who are not employable are good for nothing. There is a greater scope of being self-employed, means to become an entrepreneur. We are very fortunate that Shri Rajesh Bhatia is with us. In his collaboration, he will try to understand what are the various entrepreneurial opportunities, how an entrepreneurial opportunity will move on. So keep on thinking in this direction also. A skill is required everywhere, whether it's a technical skill, whether it's a manual skill, whether it's a human skill, or we call it a software skill. Good part is that in next 3 years, or for Comm program 2 years, you will be imparted with all these things. Normally, students are having 3 major parts after doing the graduation or post-graduation. One is to go for a job, either in corporate world or government job. Second is to become an entrepreneur. And third, especially for the uninformed students, to go to the academics. So first I would like to start with the Comm program. Through NEP, although recently we have just amended the undergraduate programs, but we have kept in mind all these 3 things while designing the Comm program curriculum, which we designed last year. You will have all the 3 avenues open with this program. If you wish to go to some job or some government services or corporate work that has been designed that way. Major part of the syllabus has also been designed keeping care of the UGC net syllabus. Means if you wish to go to the academia, that will help you in cracking the UGC net examination. And for entrepreneurship, I would like to say we are having an incubation center. You can register there free of cost. There is no charge. You are having your own business, family business, you can develop that. And if you want to start your own venture, you can also do that.
Every year, startups coming from our incubation center. We also started an MSME clinic where if you are already having a business and you need any management consultancy, that will be provided to you free of cost. On the graduation level, BCom Honors Program and BMAS Comm, you will have both the option of 3 years and 4 years. 3 years honors as well as 4 years honors and 4 years honors with research. Although that will be provided to very selected students, the basic criteria, your attendance, your marks and all those things. That will directly help you to enter in the field of research. Again, while deriving all this course curriculum, we have taken care of the development of your overall personality, the technical skill, the managerial skill, as well as the human. So next 3 years for UG program and 2 years for the PG programs. The only thing which I feel, as Dr. Sir has very rightly said, you need to be present in the classroom. Your attendance is very important. You are having very learned faculty members. You don't find such a high-grade faculty members anywhere else. But if you will not listen their lecture, what's the benefit? So this what actually you have to understand why you are here and where you have to go. You have just gone through our preamble, vision, mission, etc. Vision without action is just a dream, and action without vision is simply futile exercise. So this vision is for the entire institution, including yourself. So whatever is vision of your life, you have to go for the action. And for that you have to plan properly. One who failed to plan is planning for their failure. So every day planning is needed. Try to utilize our library. More than 35,000 books are there. There will be a separate session for the library. We are having a digital library. We are having a 5 journals. And you will be happy to know the Commerce Department is having a special journal, Commerce Research Review, that has been started last year. So you can write good articles if you are having a flavor for research, and the article will be a standard article that will publish also. So for research, for the industry, for the placements, etc., for the job, because they are having a competitive examination cell also, which will help you in preparing for the competitive examinations. And I would like to advise you all that please participate in all the activities. Various activities goes on. Whatever suits you, please participate, because you need to cultivate your personality as per the present day requirement. And in the end, I would like to just quote one slogan, which is very useful for all of you, even us also. Vidya dadati vinayam, vinaya dadati patratam, patratvat dhanam apnoti, dhanat dharmam tatha sukham. Means, Vidya dadati vinayam. Your knowledge should be in such a manner that will make you humble. Always be humble. I have seen all the great people in my life. They all were having one common quality. They all were very humble. Very humble. So Vidya dadati vinayam, vinaya dadati patratam. When you will be humble, then you will be eligible for everything. Everybody will try to accept you. When you will apply for the job, if they will see humbleness in your personality, they will select you. So Vidya dadati vinayam, vinaya dadati patratam, parshratvat dhanam. If you are eligible, then you can earn money. Dhanat dharmam. Dharmam is not just religion, it's your duty. Duty as a daughter, duty as a son, duty as a father, duty as a mother, you can fulfill when you have money. So dhanat dharmam, tatha sukham. That is the real sukh. So the essence of entire life of education. So please keep on
following all these things, attending the classrooms, and if you are having any question, please ask to the teacher. Teacher is the most happiest person when they will answer your question. So with all these words, wish you all a very great and golden day. Thank you. Thank you so much, sir, for such a brief and crisp introduction. It is my honor and privilege to introduce to you a distinguished personal, professional, an inspiring leader and a dynamic personality, C. Sudeshna Masuma. She has been a proud member of the Institution of Chartered Accountants of India since 1997 and is practicing in the field of audit, taxation, attestation functions as a partner in S. Chaudhary and Associates. Her leadership journey has been groundbreaking. She serves as a treasurer of ICAI Varanasi branch in 2009-2010 and in 2013-2014. She made a history by becoming the first lady office bearer as chairperson of the Varanasi branch. Under her able guidance, the branch achieved a historic milestone, being recognized as the best branch of the Central Indian Regional Council of ICAI in 2013, first in 25 years. Her dedication to student development is evident when she served as KICASA chairperson in 2015-2016, focusing on student teaching and welfare. She has also been the chairperson of the Indo-American Chamber of Commerce, Varanasi branch 2021-22, further expanding her contribution to trade and industry. A popular teacher, mentor and speaker, she has conducted faculty development program across prestigious institutions including BHU, DLW, SMS, SHEPA and the Department of Post and Telegraph. She has also pioneered GST awareness by organizing workshops in the leading institutions like Faculty of Commerce, BHU, Mahila Agasen Kendriya Mahavidyalaya and DLD. Beyond the professional sphere, she has been actively involved in social services. She has served as secretary and later patron of Vyapar Mandal Varanasi Women's Wing in an official CBSE career counselor in financial literacy and has been honored with multiple awards such as Kashi Shakti Award, Vishal Bharat Sansthan Award, Bharat Vikas Parishad Recognition, Navratna Samman, Times of India Impactful Woman 2025, Shubha A. Banaras Excellence Award, Lalit Chakra Academy Honor and Hindustan Aspiring Woman Award 2025. Her compassion extends to all living beings. As a member of the Society to Prevent Cruelty to Animals, Varanasi, and the President of the Animal Care Trust, she is committed to creating a more human and compassionate world, especially for the voiceless animals. With her remarkable achievement in the field of finance, education, social service, and humanitarian work, she truly embodies the spirit of leadership, compassion, and excellence. So please join me in giving a warm welcome to the ever-inspiring Sri Sudeshna Masuma. Good morning, everyone. Thank you, Anjuji, for those kind words. Respected Director, Dean, Head Faculty of Commerce, Registrar, and all dignitaries on the dais, Dean of Commerce Faculty, Professor H.K. Singh Sahab, Rajesh ji, with whom I've shared the dais a number of times, he's being a dynamic industrialist, faculty members of the dais and dear students. It is truly an honor for me to be here again as the guest of honor for the orientation program for such students who have a bright future ahead. Orientation marks the beginning of the journey of a new academic
life for you. It is not just an introduction to your course, but also a foundation for your future professional and personal life. It sets the tone for discipline, dedication and direction in your career. Let's have this an interactive session. What would you prefer? Leading a relaxed life these 5 years of your life and then working hard and struggling all your life, or doing your struggles and learning these 5 years and enjoying for the rest of your life? Which one is better? Learning, struggling and winning these 5 years. These are the years on which your edifice, your foundation will be built. Since we have commerce and mass communication students, I'll address both of you with a few points that I've mentioned for you both, because I believe these are the careers of today, especially in this AI and digital enabled world. Commerce is the backbone of any economy. It drives the country, right? We were the 5th biggest economy 5 years ago. Today we are the 4th largest economy. We have 4 countries ahead of us. We have the USA, USSR, Germany, and can anybody tell me? Because we will soon be over China. Okay, so soon we will be overtaking Germany as well. And then we go on to become the 3rd, and that is the reason why we have been dumped with so many tariffs by the Trump. By Trump, I will not say the Trump administration, but by Mr. Donald Trump himself. And that is where what I heard from Professor Singh, I heard that last time also, your incubation centers and your sector for SME is very, very necessary, because we are today vocal for local. The more you can invest and produce in your country, we have a huge market waiting for us. With rapid globalization, digitalization and financial reforms, your role as commerce graduates will be crucial in shaping business practices and ethical standards. Your basics of learning the nuances of finances in this prestigious college shall lay the edifice for your foray into fields of excellence in chartered accountancy, company secretary, cost accountancy and MBA, which is also there in your college. And one more thing for commerce individuals I would like you to say. Please remember, integrity and ethics is the biggest asset for any commerce professional. Please keep 2 things in mind. For mass communication students, you are entering into a field that shapes public opinion and drives societal change. You have a lot of responsibility on your shoulders. As warriors and soldiers, you have to ensure that this samaj that we are living in becomes a more compassionate world. Focus on building storytelling skills, media ethics, and adaptability to new technology platforms. Remember, media is not just about reporting events, but about creating awareness and accountability in society. When you tell people their rights, also remember to tell them what their duties are. Am I right? Yes or no? Children? And you have to learn that duty too. We just say this is our right, we get this, we get this. जब आपने civics पढ़ा था in your school, remember, when you do your rights, please understand your duties too. Being in mass communication means being responsible in a world already fractured by ego, anger and unreasonableness. किसी को नहीं अच्छा लगता है ना to fight with people, so we have to ensure that we are responsible in that. Be lifelong learners. I still learn. Even today that I have come here, I take back a lot with me when I interact with you. Network with peers and faculty
Relationships often open more doors than qualifications alone. Balance your academics with extracurricular activities like your college does. And also I would request Rajkumar sir, my trust that is there have been institutions like UPS, there are Christ College Bangalore, some students from commerce faculty sir, who have come and interned or have seen. Sunbeam is a regular visitor. So you learn empathy and compassion towards the voiceless, towards that part of a samaj who don't know that you have to earn money to get 2 rotis a day. How many of us feed the stray cows or the dogs or even the birds that come? कितने लोग खिलाते हैं? उनको ये नहीं पता कि एक रोटी के लिए हमें 5 रुपए देने पड़ते हैं, ना वो कमा सकते हैं, right? So we are humans, intelligent beings. We created money. We did the barter system. So we brought dogs and cows to live with us. Our Purvaj did that in Gurukul. So it is today our responsibility to live in a world driven by compassion. So be honest, gentle and soft with all beings who inhabit this earth along with us. All trees, birds, community dogs, cows and stray bulls. Our society is a multidimensional and multifaceted one, and our action towards other animals and humans will make this world a safer and better place to live in. आप लोग देखते होंगे रोड रेज, एक गाड़ी क्रॉस करके चली गई, आप उतरे, why did that car cross me? And then you start fighting and you even result in death of that other person. बाद में जब सोचते हो, was that anger correct? It was not. There's a dog who has barked at you, you take the stick and you run after it. That dog identifies you, and then at a later time it will come back and attack you because attack is the best form of defense. And you forgot that you did that in a moment of anger. That is where we have to rein it towards our fellow beings. You may have heard of children of class 8. That's all in the news, going and killing children of class 10. This is not the society we are dreaming of. We are not living in a gun culture like USA, where somebody takes a gun, goes to school and shoots anybody at random. Please avoid that. And I will just end with a small poem that I have written for you. A new door begins, the path is wide. With dreams and courage you step inside. Some with numbers, some with a pen. Each of you destined to lead, not just blend. Commerce will teach you values and trade. The ethics of business, foundations laid. Mass comm will give you a voice so strong to speak for the right, to stand against the wrong. Books will guide, but so will life. Both will test you with joy and pride. Learn with passion, live with grace. Being a better human being, along with your profession, is so nice. The world awaits your unique place. So march ahead with hope as your friend. This is the start, not the end. With wisdom, courage and dreams anew, the future is beginning. And it belongs to you. Thank you. So much, ma'am, for the lovely poem and your blessings. Today we are blessed to have with us a visionary entrepreneur, a respected leader and a committed contributor to both industry and society, Mr. Rajesh Bhatia. He holds a master's degree in chemistry and a degree in law, blending scientific knowledge with legal acumen. His entrepreneurial journey began in 1987 with the establishment of Dinesh Packing Industry in Jaunpur. Specializing in corrugated packaging with dedication and innovation, he went to establish Pavan Udyog in Varanasi in 2000, which today stands as a trusted name in offering customized, high-quality packaging solutions across diverse industries. Beyond his own enterprise, Mr. Bhatia has become deeply engaged in nurturing entrepreneurship and strengthening industry academia collaboration in Varanasi, inspiring many thought
his efforts. His leadership is reflected in many prestigious positions he has held. He has served as a president of the Small Industry Association, president of the UP Corrugated Box Manufacturing Association, and has been an elected member of the Central Executive Committee of the Indian Industry Association. He has also extended his service to the community as a president of a Rotary Club Varanasi Central. Adding further value to the education and governance, he serves as a member of the advisory committee of Mahanagar Udyog Vyapar Samiti, member of Quality Council of India at Vasant Kanya Mahavidyalaya, and as a governing body member of Sati Banaras Hindu University. With his rich experience, visionary outlook, and service-driven leadership, Mr. Bhatia truly exemplifies the spirit of enterprise, excellence, and social responsibility. I humbly request you, sir, to please enlighten our new entrants with your inspiring words of wisdom. Sir, please. Thank you so much. Director of SMS, Sir P. Jha sir. आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर एच.के. सिंह सर, एंटरप्रेन्योरशिप और एकेडमिक दोनों में अपनी पहचान रखने वाले प्रोफेसर राजकुमार सर, सुदेशना जी, अभी आपने सुना बहुत एक्टिव है, ये पेट्स के लिए आपका काम बहुत जबरदस्त है, हम लोग देख रहे हैं। SMS के फैकल्टी जो यहाँ पे हैं और डियर स्टूडेंट्स, ये आज का दिन जो है ये आप सब के लिए एक नई जर्नी, एक नए जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है। फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज, फ्रॉम डिपेंडेंसी टू इंडिपेंडेंस, एंड फ्रॉम ड्रीमिंग टू अचीविंग, ये जो फेज है आपका। और मैं आज इस मौके पर इस प्रतिष्ठित संस्थान जहाँ अक्सर मेरा आना रहता है, इसमें क्या कोई ब्यूटीफुल संस्थान, इतना सुंदर बना हुआ ये SMS, यहाँ आने को बार बार दिल करता है। और आप भी जब अपने स्कूलिंग करके यहाँ पहली बार इंटर किए होंगे तो आपने भी कुछ ऐसा ज़रूर फील किया होगा यहाँ के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ सर आपको कि आपने मेरे को मौका दिया कि स्टूडेंट्स के साथ कुछ मैं अपने विचार साझा कर पाऊँ। एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। नेल्सन मंडेला जी ने ये बोला था, और ये चीज़ें बिल्कुल आज पूरे विश्व में देख लें, अपने देश में देख लें, अपने घर परिवार में देख लें, ये चीज़ें बिल्कुल साफ होती हैं। कॉलेज, आप सब कॉलेज में आए हो, तो कॉलेज इज नॉट जस्ट अबाउट मार्क्स, क्लासेस और एग्जाम्स। ये समय है खुद को डिस्कवर करने का, ये टाइम है, यहाँ आप सीखेंगे हाउ टू थिंक, हाउ टू क्वेश्चन एंड हाउ टू इनोवेट। ये जो अगले 3-4 साल 5 साल आप इस कॉलेज में रहेंगे, आज की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, रोज नई टेक्नोलॉजी, नए जॉब्स, नई अपॉर्चुनिटी। इसलिए याद रखिए, मैंने भी अभी कहा कि लर्निंग इज नॉट इवेंट, इट्स ए लाइफ टाइम प्रोसेस। आज हम भी यहाँ पर हैं, यहाँ से जाएंगे तो कुछ सीख करके जाएंगे, और हमेशा मन में ये रहता है कि कॉलेज में चलेंगे तो जो चीफ गेस्ट होंगे, प्रोफेसर होंगे, उन पर सुनेंगे और कुछ बेहतर यहाँ से सीख के जाएंगे। ये बिल्कुल लाइफ टाइम लर्निंग प्रोसेस है। तो अभी ये आपकी आज कॉलेज से शुरुआत है। टेल मी ऑनेस्टली, एकदम मेरे को सोच के बताइए इस बात से कि हाउ मेनी ऑफ यू कम हियर विद ए क्लियर ड्रीम ऑफ व्हाट यू वांट टू बिकम इन लाइफ। सोचा है आपने
एडमिशन लेने के पहले कभी मन में था? चलिए छोड़िए, मैं आपको एक पंचतंत्र की कथा सुनाता हूँ। अभी कल परसों ही कहीं पढ़ी हमने, मुझे को अच्छी लगी तो आपके साथ भी शेयर करता हूँ। एक तालाब में 3 मछलियाँ रहती थी। उनका नाम था अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य। अब अनागत विधाता क्या थी कि अनागत विधाता वो थी जो कोई समस्या आने से पहले उसको भाप लेती थी और उसका उपाय कर लेती थी समस्या से बाहर आने का। प्रत्युन्नति वो थी जो समस्या आने पर, समस्या जब आ जाती थी तब उसका उपाय ढूंढती थी और उससे बाहर निकलने का उपाय करती थी। और तीसरी थी यद भविष्य, जो भाग्य के भरोसे रहती थी कि ठीक है जैसा होगा देख लेंगे, जो भाग्य में होगा वो कर लेंगे। तो आज के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में मैं देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो अनागत विधाता मुझे चाइना लगता है, जो 10 साल पहले समझ लेता है कि क्या होना है। आज हम रेयर अर्थ की बात कर रहे हैं सर, उसने 10-15 साल पहले से रेयर अर्थ पे कब्जा कर रखा हुआ है। और प्रत्युन्नति मैं हिंदुस्तान को समझता हूँ, अपने देश को समझता हूँ कि जब भी समस्या आती है हम बिल्कुल मजबूती से उठ खड़े होते हैं, उसके समाधान के लिए एकदम तत्पर हो जाते हैं। और जरा सा ये लगता है कि समस्या अपने कंट्रोल में आ गई तो फिर चुपचाप आके बैठ जाते हैं, उसको कंटिन्यू करते नहीं है, मैं जो समझ पाता हूँ। और तीसरा यह भविष्य की बात करें तो मेरे को पाकिस्तान नजर आता है कि छोड़ दिया, देश का भविष्य जैसे होगा जैसे चलता रहेगा। तो हमारा जब देश संकट के आने पे हाथ पांव मारता है, सुधार करता है, फिर भूल जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसमें से आप अपने आप को किस मछली के रूप में देखते हो? नाम याद है आपको तीनों मछलियों के जो हमने बताए अभी? भूल गए ना, नाम भूल आप लोग। अनागत विधाता, अनागत विधाता याद रखिएगा। दूसरा है प्रत्युन्नति और तीसरा है यद भविष्य। तो आप लोग विचार कर लीजिए, आप यद भविष्य में हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा और अच्छा सोचिए और विचार करिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई भी संकट आने वाला है, कोई भी आगे चैलेंजेस आने वाले, संकट में कोई चैलेंजेस, अभी तो आपकी लाइफ शुरू हुई है, निश्चित तौर पे चैलेंजेस आएंगे। कोई भी चैलेंजेस आने वाले तो उसके प्रति बिल्कुल जागरूक करिए। अनुभव, अवसरों, परिस्थितियों एवं संघर्षों की अनवरत यात्रा से ही सफलता की प्राप्ति होती है। और इस सतत यात्रा में जागरूकता एक ऐसी शक्ति है जो हमें वास्तविकता से परिचय कराती है और साथ ही साथ हमें अंतर्मन से जोड़ करके भी रखती है। ये जो जागरूकता का एक क्वालिटी है वो आपको, जो आपके अंतर्मन में है उसका भी ध्यान रखती है और जो आपकी जो बाहर की वास्तविकता है उससे भी आपको अलर्ट रहती है। जागरूकता का अर्थ है किसी भी विषय के प्रति सजगता एवं सतर्कता का परिचय देते हुए अधिकतम ज्ञान अर्जन का प्रयास करना। इतना जोर बार बार आपको जागरूक रहने के लिए इसलिए दे रहा हूँ कि आपकी लाइफ यहाँ से शुरू हो रही है, लाइफ का ये गोल्डन फेज यहाँ से शुरू हो रहा है आपका। सही अर्थों में सफल जीवन और जागरूकता एक दूसरे के पूरक है। किसी भी विषय के प्रति जागरूकता उसे विषय में हमारी समझ को विकसित एवं उन्नत बनाने में मदद करती है। इसलिए आप सभी को जीवन में सफलता के सोपान पे अग्रसर होने हेतु जागरूकता का भाव अपने अंदर लाना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अनागत विधाता, प्रत्युन्नति और यद भविष्य न बन करके अनागत विधाता जैसा अपने अंदर भाव रखें कि कोई भी समस्या, कोई भी चैलेंज आए उसके लिए हम अपने आप को खुद से पहले से प्रिपेयर करके रखें। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी एंटरप्रेन्योरशिप की, जो मेरा विषय है। मैं एंटरप्रेन्योर हूँ और मुझे इस बात पे गर्व है कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। गर्व क्यों है? गर्व इस बात का है कि जॉब करता, नौकरी करता तो खुद के लिए करता, अपने परिवार के लिए करता। एंटरप्रेन्योर हूँ, इंडस्ट्री चला रहा हूँ तो 10, 20, 50 परिवारों को साथ लेके चल रहा हूँ। इस बात का एक सुकून है अपने अंदर। बीइंग एंटरप्रेन्योर, ये जो 30-35 साल की मेरी जर्नी, अगर हमको लगता है, मैं कभी सोचता हूँ कि क्या कैसे ये हुआ, कैसे हम भी ऐसे आप जैसे कॉलेज में बैठे थे, कहाँ से कैसे ये चेंजेस आए। सर्विस क्लास फैमिली का बैकग्राउंड है मेरा, मेरे मम्मी पापा दादा दादी सब लोग सर्विस में रहे। और मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ, सर्विस क्लास फैमिली से जो लोग होंगे उनके बच्चे अगर कहीं सर्विस छोड़ करके कुछ और करना चाहेंगे तो बड़ा मुश्किल काम होता है। सर मैं बताऊं, नौकरी वालों के
आप अदरवाइज मत लीजिए। मन में एक ऐसा भाव रहता है कि ये जो व्यापार करने वाले, उद्योग करने वाले, ये तो सब चोर बेईमान है, ये लोग शरीफ लोग नहीं है। और पता नहीं क्यों मेरे फादर भी मेरे को जब मैं इंडस्ट्री लगाने की बात करी और जब इंडस्ट्री में आया तो फादर ने कहा ये कहाँ ये बेईमानों के काम में तुम जा रहे हो, उन्होंने बोलना मेरे से बंद कर दिया था। तो मेरे को नहीं समझ में आता था कि ऐसा क्यों कंसेप्ट बना हुआ है, जबकि पूरे इस देश की अर्थव्यवस्था चलाने में, इस देश की पूरी इकोनॉमी सेट करने में, इस देश को चौथी अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था तक ले जाने में 2047 तक देश को उन्नत राष्ट्र, सब चीज में बात अगर आती है तो बोलता है कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, हम सब जानते हैं कि भाई इसमें इंटरप्रेन्योर आ गए हैं, उद्यमी व्यापारी आ गया है, तभी काम होता है। लेकिन फिर भी वो एक मन में भाव था। तो मुझे लगता है कि ये सक्सेस जो है ये सिर्फ आपको डिग्री तो देखिए जरूरी है जीवन में, लेकिन आप ये मानिए कि सक्सेस सिर्फ डिग्री से नहीं आने वाली है। डिग्री के साथ आपके अंदर एटीट्यूड, परसिस्टेंस, ये सब भी होना चाहिए। आपकी एक नजरिया होना चाहिए, एक मनोदृष्टि होनी चाहिए चीजों को देखने की, एक चीजों को काम करने की, कुछ भी सोचने की दृढ़ता होनी चाहिए मन में कि हाँ ये हम कर सकते हैं। इंडस्ट्री को आज क्या चाहिए? इंडस्ट्री को स्किल, क्रिएटिव, कॉन्फिडेंट यूथ चाहिए। यूथ से बात आती है, हम विश्व के सबसे बड़े यूथ वाले देश में हैं, सबसे ज्यादा यूथ हमारी कंट्री में है, फिर भी हम थोड़ा सा पीछे रह जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये भी विचार करने वाली बात है। आज इतना इंटेलिजेंट यूथ के साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि हम इंटेलिजेंट यूथ हैं। हम सबसे इतना बढ़िया युवाओं का देश होने के बावजूद भी हम आज तक कोई ऐसा ब्रांड नहीं बना पाए जो अमेरिका, जापान, जर्मनी, कोरिया के ब्रांड की तरह वैश्विक हो। सालों साल गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, फेसबुक में, एप्पल में हमारी लोग कोडिंग कर रहे हैं, हमारे भाई बंधु वहाँ बैठे हुए सारा काम कर रहे हैं। लेकिन चाइना की तरह अभी हम अपना कोई भी वीचैट, टिकटॉक हुआ हो क्यों नहीं बना पाए? ये सब भी विचार करने की बात है। हम इंटेलिजेंट भी हैं, हम काम भी करते हैं। पूरे विश्व में जहाँ भी कोई काम इस तरह के बड़े हो रहे हैं, जहाँ भी कोई बड़े वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं, जहाँ भी कोई ये बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही, सब सारे ये हिंदुस्तानी चला रहे हैं। ये चाइना की चैट जीपीटी के जवाब में चाइना ने आधा दर्जन एआई मॉडल बना डाले। हम बैठे हुए हम तो कुछ नहीं बना रहे, वही चैट जीपीटी लेके चल रहे हैं। तो इस पर भी कहीं न कहीं विचार करने की जरूरत है। और ये अभी आपकी शुरुआत है। मैंने इसलिए ये थोड़ी सी बात आपके मन में, आपके कान में डाली है कि सोचिए, हम एक बढ़िया उन्नत देश के उन्नत नागरिक हैं, हम कहाँ रुक रहे हैं, हम कहाँ पीछे रह जा रहे हैं। सफलता प्राप्ति के जो 2 मंत्र मेरे को अच्छे लगते हैं, मैं आपको शेयर करता हूँ। निश्चित अपनाइए, जीवन में अपनाइए। थिंक बिग, टेक रिस्क। बड़ा सोचिए, एक लार्ज स्पेक्ट्रम में सोचिए। छोटे सपनों से बड़ी मंजिलें नहीं मिलती, बड़े सपने बनाइए। और जो सोचता है वही करता है, जो करता है वही सफलता पाता है। कुछ करेंगे नहीं तो सफलता कहाँ से मिलेगी? और रिस्क तो हमेशा जीवन में लेना है। सुरक्षित खेल करके कभी कोई बड़ा मुकाम नहीं हासिल होता। आपको रिस्क तो लेना ही होगा, कदम भी लेना होगा। आप सब जानते हैं धीरू भाई अंबानी जी का क्या थे, पेट्रोल पंप के ऐसे अटेंडेंट जैसी नौकरी शुरू करके, या जो भी ऐसी छोटी सी नौकरी शुरू करके इतना बड़ा अंपायर उन्होंने खड़ा किया। और उन्होंने साबित किया कि विजन और करेज हो तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। ऐसा विजन रखिए, बड़े सपने देखिए, बड़े सपनों का असर बड़ा होता है। मैं देख रहा था कहीं उनका वर्गीस कुरियन जी का अमूल के उन्होंने अमूल बनाया है। कैसे बना दिया है, छोटे छोटे लोगों को, छोटे छोटे गाय पालकों को जोड़ के इतना बड़ा साम्राज्य। मुझे लगता है शायद विश्व का वो सबसे बड़ा एक मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी है अमूल। इस तरह की जो कॉपरेटिव सेक्टर बना, क्या विजन रहा होगा। तो ऐसे ही ना, आप जैसे लोगों में से ही निकले लोग हैं वो लोग भी। डेवलपमेंट इज अबाउट एम्पावरिंग पीपल, नॉट जस्ट बिल्डिंग मशीन्स। ये कुरियन जी ने कहा और मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये कोट। कॉलेज इज नॉट ओनली अबाउट ग्रेड्स, इट्स अबाउट ग्रोथ। ये समय है अपने सपनों को शेप देने का। क्या कितनी बढ़िया बात लिखी हुई है। ये जो टाइम है ना, अभी जहाँ पे आप हैं, आपने बीकॉम की जो ग्रेजुएशन की जो शुरुआत हुई है, अभी जो आप स्कूल से निकल करके 12 पास करके जो यहाँ आए हैं,
यहाँ बड़ी उड़ान है सपनों की, और बड़ी उड़ान में थोड़ा भटकने का भी खतरा है। तो उस खतरे से भी आपको आगाज करता हूँ, उस खतरे से भी आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। यहाँ बड़े नए नए दोस्त बनेंगे, आपके नई फ्रेंडशिप आएगी, अलर्ट रहिएगा। दोस्त किसको बनाना है, किसके साथ रहना है, ये सारे लोग कहीं ना कहीं से, ये आपकी जो फ्रेंडशिप है वो कैसी है, ये कहीं ना कहीं ये सब कुछ आपके कैरियर को शेप करने में, आपके कैरियर को एक अच्छा भविष्य देने में निश्चित तौर पे मदद करेगी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ठीक है, नौकरी के लिए पढ़ते हैं बहुत सारे लोग, आप भी पढ़ रहे होंगे, और इस उम्र में सिर्फ यही दिखता है कि पढ़ के नौकरी करेंगे, लेकिन हम यहाँ जब आए हैं एंटरप्रेन्योर, तो मैं आप सबको आह्वान करता हूँ, आप सबको कहता हूँ कि इस बारे में भी सोचिए कि पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं करनी है। पढ़ाई अपने पैरों पे खड़ा होने के साथ साथ अपने जैसे कुछ और लोगों को भी पैरों पे खड़ा करने के लिए होती है। बी एंटरप्रेन्योर, कोशिश करिए, देखिए। और आप जिस कॉलेज में हैं, SMS में तो प्रोफेसर राजकुमार सर जैसे कितने लोगों को इन्होंने एंटरप्रेन्योर बना दिया है। तो थोड़ा इनके टच में रहिए, पूछिए, सर से मिलते जुलते रहिए, निश्चित तौर पे आपको भी इसका लाभ मिलेगा। ड्रीम बिग, वर्क हार्ड एंड नेवर गिव अप। बड़ा सोचिए, मेहनत करिए। सबसे बड़ी लड़ाई खुद से ही होती है। जब दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। दिल करता है ये करो, दिमाग कहता है ऐसे करो। वहाँ जो द्वंद्व आपके मन में चलता है, आंखें सपनों में खो जाए पर हालात सोने न दे। आंखें सपने देख रही हैं, नींद उड़ी पड़ी है, वो स्थिति है। हर रोज थोड़ा टूटते हैं, फिर भी खुद को समेटते हैं। यहाँ जो खामोश जंग चल रही है आपके अंदर, यही आपकी असली हिम्मत की निशानी है। उस जंग से जब निकल करके आप आएंगे तो आप खड़े सोने जैसे एक चमकते हुए सितारे नजर आएंगे। अटल जी की एक कविता है, सुनाना चाहूंगा। मुझे अच्छी लगती है, आपको भी अच्छी लगेगी। जीवन में कहाँ कठिनाइयां नहीं, कहाँ विपदाएं नहीं, लेकिन सबसे पार पाना है ना। विपदाएं आती हैं आए, हम न झुकेंगे, हम न रुकेंगे। विपदाएं आती हैं आए, हम न रुकेंगे, हम न रुकेंगे। आघातों की क्या चिंता है, हम न झुकेंगे, हम न झुकेंगे। आघातों की क्या चिंता है, हम न झुकेंगे, हम न झुकेंगे। और जब तक ध्येय न पूरा होगा, गांठ बांध लीजिए मन में, जो आपने एम बनाया, जो आपने उद्देश्य बनाया है, जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को बिना झुके न रहेगी, कल को बिना झुके नहीं रहेगी। थैंक यू सो मच। और उम्मीद करता हूं कि जितनी जोर से आपने तालियां बजाई हैं, उतने ही जोर से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। थैंक यू। Motivational words of wisdom. Now it's time to be blessed from our chief guest. It is great honor for me to introduce and welcome our chief guest, Professor Singh sir. Professor Singh is presently serving as Dean and Head of the Faculty of Commerce, Banaras Hindu University, Varanasi. With over 37 years of teaching and research experience, Professor Singh has significantly contributed to the field of commerce and management and even higher education. A gold medalist in BCom and MCom from Allahabad University, he earned his DPhil in 1992 and began his academic journey soon after qualifying the prestigious UGC JRF. He has guided more than 24 PhD scholars, authored 19 books, and published nearly 60 research papers. Notably, 3 of his books have been recognized as the best textbook by AICTE in New Delhi. Professor Singh's leadership has extended beyond classroom. He has served as a founder Vice Chancellor of Maharishi University of Information Technology, Lucknow, Managing Editor of Indian Journal of Commerce, Treasurer of the Indian Commerce Association, and currently President of the Indian Association for Management Development. He has delivered over 500 invited lectures across the country
and continues to play a key role in shaping higher education through academic councils, selection committees, and NAC PLT. A mentor, motivator, and social contributor, Professor Singh stands as a true academic leader whose work inspires both his students and colleagues. Without taking much of your time, I would like to request Sir to please bless our students with his inspiring words. Sir. Thank you, Dr. Anju. A long introduction about me was given, and actually I am not so brief. Due to affections, he explained a lot about me. I am now 62 years old, and if you ask to me to elaborate my journey of 62 years, it's a journey for everyone. You are born as a human being, and I have spent 62 years from human being to being human. This is the real journey. From human being to being human. Honorable Professor P.N. Jha, the director, my bosom friend Mr. Rajkumar Singh ji, Mr. Rajesh Bhatia, C.S. Vesna Basu ji, the registrar Mr. Sanjay Gupta, Dr. Cecil Gujarati, other faculty members and dear friends. इतना बढ़िया बोल दिया राजेश भाटिया जी ने कि अब मुझे बोलना बहुत कठिन हो गया है। बोल रहे हैं मुझसे ही सीखा है, और सीखते सीखते चेला गुरु से भी अच्छा हो गया है। Friends, our subject is commerce management economics. I am starting from 1947. इतना कठिन काम था, इतने बड़े देश को आजाद किया, और हर किताब में लिखा रहता है अहिंसा के बल पे आजादी मिली। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। महात्मा गांधी को श्रेय मिलता है कि वो आजादी के प्रथम श्रेणी के सपूत थे। मैं किसी आलोचना के भाव से नहीं कह रहा हूं। अगर यही सत्य था तो देश की आजादी के साथ इतना विध्वंसक बंटवारा नहीं हुआ होगा। To take the history of entire globe, there was independence with a serious partition. दो पाकिस्तान दिए गए, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। जो भी ट्रेन आती थी उसमें केवल डेड बॉडीज रहती थी। जिस महात्मा गांधी ने तय किया कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बनेंगे, उनके शपथ ग्रहण में रहने का मौका महात्मा गांधी को नहीं मिला। नोआखाली में ऐसा दंगा हो गया हिंदू मुसलमान के नाम पे। He was compelled to go to West Bengal and he was not in the position to be at Delhi for the oath taking of Jawaharlal Nehru. इतनी हिंसा हुई, जो कुछ मेन रिसोर्सेज थे वो पाकिस्तान में चले गए और आबादी मेजॉरिटी की हमारे पास रह गई थी। It was a real serious challenge for our country. We are passing through Amrit Kaal. Let us take the history of at least 75 years. 2022 से 2047 आपको मौका मिला हुआ 25 साल का ये अमृत काल है। 1947 में आजादी मिलती है। The first paradigm shift for the economic policy took 4 years. इतने बड़े देश के लिए पहला पैराडाइम शिफ्ट इन द केस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज इट टुक 4 years. In 1951, our visionary prime minister, the first prime minister, the middle prime minister, he decided the planning commission. 1951. अब नाराज न होना, वही गलती हो गई। 5-5 साल की योजना बनने लगी। 1917 there was Bolshevik revolution to Russia. और वहां योजना बनी 20 साल के लिए। क्या देश की योजना केवल 5 साल के लिए बनेगी? इतने बड़े देश को चलाने के लिए लंबी योजना बननी चाहिए, दीर्घकालिक योजना बननी चाहिए। In Russia, they decided about 20-year plans.
There was Bolshevik revolution wherein one day on Monday the Russia got independence and it took so many years for getting independence. तो मैं आपसे कह रहा था 1951 the planning commission was started. 4 साल लग गए पहला पैराडाइम शिफ्ट आने में. Now after 20 years 1971 मिसेस इंदिरा गांधी was the prime minister, same कांग्रेस पार्टी. उनको तो दुर्गा कहा गया ना. देश में बताया गया विकास का मेन मॉडल होगा समाजवाद. The basic model of growth will be socialism, focusing on the public sector. In 1969, the private commercial banks were nationalized. The cotton textile mills of Ahmedabad, which were in private sector, those were nationalized, and NTC was established, National Textile Corporation. माने जो प्राइवेट सेक्टर में नहीं चल पाया उसको सरकारी क्षेत्र में लाया गया और ये देश को बताया गया तेज विकास के लिए पब्लिक सेक्टर विल बी द रोल मॉडल. 1971 इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनवाया और ये तय हुआ कि समाजवाद में इस पब्लिक सेक्टर के माध्यम से देश का तेज विकास होगा. 1991 again 20 years. Now the same Congress party was in the ruling party. And Narasimha Rao government and champion finance minister Mr. Manmohan Singh साहब. सब लोग कहते हैं NEP, National New Economic Policy, और उसका नारा क्या था? LPG, Liberalization, Privatization, Globalization. It means the focal point was privatization. मैं अब एक सीरियस सवाल आपसे पूछ रहा हूँ. 1991 में बाल्को was privatized through Parliament. पार्लियामेंट में कहा गया भारत एल्युमिनियम कंपनी को पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में बेचते हैं. इसका मतलब अब कहा जाता है द बेसिक ड्यूटी ऑफ पब्लिक सेक्टर इज टू वर्क प्रॉफिट. अब ये तय होता है कि पब्लिक सेक्टर को भी प्रॉफिट कमाना है. फ्रॉम 1947 अप टू 1991 नेवर द गवर्नमेंट गेव एनी डायरेक्शन टू अर्न प्रॉफिट. इतने साल लग गए आज तक नहीं बताया गया कि प्रॉफिट कमाना है और अचानक कहा गया प्रॉफिट कमाओ नहीं तो प्राइवेट को बेचेंगे. आप नाराज मत होना, आपके पिताजी आपको भेजे हैं टू एक्वायर द नॉलेज एंड एट रैंडम ही योर मदर और फादर इज जजिंग योर यार्डस्टिक्स दैट यू आर नॉट गेटिंग मनी. आपको भेजा गया पढ़ने के लिए और अचानक कहा गया पैसा नहीं कमा रहे. द सेम हैपेंड टू द पब्लिक सेक्टर. The basic duty was assigned for the social betterment, and a random government of India decided the corporate government policy that they have to earn profit. खैर भला हो 1991 में तय हो गया whether you are working in the public sector or private sector, we have to care about profit. लाभ सबको कमाना है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो पब्लिक सेक्टर में हो. राजेश भाटिया जी बात कर रहे थे वर्गीज कुरियन का. द कोऑपरेटिव सेक्टर द रोल मॉडल अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड. सबको समझ में आना चाहिए अमूल द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर. एंड द बेसिक फिलॉसफी ऑफ कोऑपरेटिव वन फॉर ऑल फॉर वन. अमूल ने बता दिया आपके बनारस में भी बनारस खुल गया. खाली दूध की क्रांति किताब में दिखाई पड़ती थी. अगर अमूल नहीं आया होता ना तो व्हाइट रिवॉल्यूशन नहीं होता. व्हाइट रिवॉल्यूशन आकर ड्यू टू अमूल. वर्गीज कुरियन was such champion. He was a Christian fellow and he started at Anand in Gujarat the best role model. तो मैं आपसे कह रहा था 1991 से कम क्लियर हो गया है हर एक को लाभ कमाना है. आपके घर में बड़ा अच्छा लिखा होगा शुभ लाभ. ध्यान दे लीजिएगा. अशुभ लाभ की मैं बात नहीं कर रहा हूं. ये गणेश जी के 2 लड़के थे, एक शुभ और एक लाभ. We are thinking about the fair profit, optimum profit. We are not talking about the profit maximization. We are talking about profit optimization. हमको शुभ रास्तों से लाभ कमाना है. किताबें भरी पड़ी हैं विजय माल्या सुगत रास्ते. अगर गंदे रास्तों से लाभ कमाओगे परिणाम भी वैसे ही आएंगे. We have to earn profit, but we have to earn profit through discharging the corporate social responsibility, and that is the corporate governance. तो 1991 से क्लियर हुआ कि साहब कमाना है लाभ. In those days, in 1986, I started my teaching career, and we were talking about those paradigm shifts
that again after 20 years we were expecting in the year 2011. हमको ये उम्मीद थी कि 2011 जब आएगा फिर से आर्थिक नीतियों में आमूल-चूल परिवर्तन हो जाएगा और जब 2020 आएगा 2020 the vision of Abul Kalam, India will become a developed nation, super economic power, BRICS जो आज बात चलती है, fourth in GDP, this type of communication. मुझे तो बहुत संकोच है आपसे कहने में, किताब में लिखा रहता है इंडियन इकोनॉमी इज डेवलपिंग इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी। अरे हम कभी बैकवर्ड थे ही नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। हम कभी डेवलपिंग नहीं थे, हम इस तरह की व्याख्या को नहीं स्वीकार करते। ये नोट कर लीजिए, चाहे माइक्रो लेवल हो चाहे मैक्रो लेवल हो, कैटेगरीज आर ओनली टू एंड दैट इज मिसमैनेज एंड वेल मैनेज। हम इस तरह के राजनीतिक भाषाओं को नहीं प्रयोग करते हैं कि ये बैकवर्ड है, ये फॉरवर्ड, ये डेवलप है, ये डेवलपिंग है। इकोनॉमी तो ये कोई बच्चे कहीं पढ़ने में कमजोर, कोई पढ़ने में कमजोर नहीं। इफ यू आर डिसाइडिंग प्रोफेशनलिज्म इन वर्किंग, ओनली नरेंद्र मोदी और पीएम विल नॉट वर्क 24/7, एवरीवन हैज टू वर्क 24/7। अगर हमने तय किया कि मैं 24 पूरे 7 काम ही करूंगा तो मैं फॉरवर्ड हूं, ये सब बातें भूल गए क्या? We were talking about well managed and mismanaged. Somehow we people decided mismanagement, and now that the new generation has decided well management. अब ये बात चली है तो 2011 में मुझे उम्मीद थी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन होगा, लेकिन नाराज में थोड़ा नहीं हो पाया। कभी-कभी ऐसा होता है, कोई टीचर बड़ा अच्छा हो, लेकिन जब हेड बनता है, डीन बनता है, डायरेक्टर बनता है, डीसी बनता है तो संस्था को डुबो देता है। नाराज मत होना, चैंपियन फिनांस मिनिस्टर नाउ प्राइम मिनिस्टर, now who is the prime minister, and we were expecting major changes with economic policy. 2009 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई, मुझे मौका मिला हुआ था। फाइनेंशियल क्राइसिस वाज क्राइसिस फॉर यूएस इकोनॉमी, नॉट फॉर अस। आवर फाउंडेशंस आर वेरी स्ट्रांग। 2011 में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन 2014 आते आते परिवर्तन दिखने लगे। पहला परिवर्तन देखिए, द प्लानिंग कमीशन वाज कन्वर्टेड इनटू नीति आयोग। अब प्लानिंग कमीशन आज नहीं है, आज इसका हिंदी वाला नीति नहीं, अंग्रेजी वाला नीति है, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मोदी साहब को समझ में आ गया था खाली प्लान बनने से काम नहीं होता, टाइम टेबल बड़ा अच्छा बनता, पढ़ाया जाता ही नहीं। पढ़ाने के लिए टाइम टेबल नहीं, उसके लिए जिगर होना चाहिए। टाइम टेबल बड़ा अच्छा बने, सुबह 4 बजे जग जाऊंगा और 4 से 9 लगातार 5 घंटा पढ़ूंगा और बाहर लिखते हैं सीरियसली स्टडी गोइंग ऑन, डोंट डिस्टर्ब मी। मैं समझ जाता हूँ खाली हवा पानी कर रहा था। पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल लगाना नहीं पड़ता, पढ़ना पड़ता। Anyhow, Modi government decided to convert the planning commission into नीति आयोग। और हम लोग उम्मीद कर रहे थे, नई नई बातें शुरू हो गई थी कि अब 2020 जब आएगा हम लोग को भी कहा जाएगा विकसित भारत। 2020 तो मित्रों आया, न भूतो न भविष्य। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था जो हम लोगों ने देखा, और आप जिंदा इसलिए कि भगवान की बाती कृपा थी और आपकी लिविंग स्टाइल बड़ी प्यारी है। इंडिया वालों पे गौरव होना चाहिए। हमारा जो लिविंग स्टाइल है, हमारा जो नमस्ते है, दुनिया में सबसे अच्छा है। हमारा जो बार बार हाथ धोना है, पूजा वूजा बहुत हाथ धोते हैं, हमारा जो खान पान की प्रथा है वो सब बहुत अच्छी है। तो 2020 इट वाज जस्ट लाइक थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो 2020 में तो काम बिगड़ गया, लेकिन 2020 में 2 प्रमुख काम हुए। एक तरफ इतना बड़ा संकट आया था, कोविड-19 स्टार्टेड इन March month of 2020, Modi government decided NEP, National Education Policy 2020, and point number 2 ANBA, आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये जो बड़े काम हैं, जहाँ साहब कह रहे थे NEP, holistic growth and all that, I definitely agree। मैं कई भाषण कर रहा था और बोलते बोलते NEP को ज्यादा पढ़ाई करती है। एक विद्यार्थी खड़ा हुआ कि साहब ये तो पूरा फेल होने जा रहा। ऐसी ही चर्चा आजकल होती है। अरे आप तो प्रबंध के विद्यार्थी हो। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग एंड द लास्ट फंक्शन इज कंट्रोल। शुरुआत होती है प्लानिंग से और खत्म होता है कंट्रोलिंग। एंड देयर आर 8 इंस्ट्रूमेंट
instruments of planning, and out of those instruments one is the policy. प्लानिंग के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसमें एक पॉलिसी भी है। तो एनईपी इज आल्सो ए पॉलिसी, और पॉलिसी का लीगल सक्सेस डिपेंड करता है इंप्लीमेंटेशन। खाली योजना बनाने से कोई काम। एनईपी इज ए पॉलिसी एंड देयरफॉर द रियल सक्सेस लाइज विद द टीचर। टीचरों को सोचना होगा हम वहां के हालात को देखते हुए कैसे लागू करें, और अगर हम और आप एनईपी और एएनपीए को सफल बना देंगे तो be sure whatever loss occurred in 2020, the COVID-19, the third world war, the benefits will be higher than that. And now the last turning point, 2022. 2022 is the post-COVID era. अब आ चुका है, 22 के बाद कोरोना से खत्म हुआ, ये पोस्ट-कोविड era है। And from 2022 to 2004, it is the अमृत काल, और इस अमृत काल में हमको आपको तय करना होगा कैसे देश को विकसित बनाना। कम से कम आपको मौका मिल रहा है इस अमृत काल में काम करना। मैं एनईपी के कॉन्टेक्स्ट लेकर आपको बोलता हूं एरिया, AREA। थिंक अबाउट फर्स्ट ए मींस एकेडमिक, R is the research, E is the extension, and finally एडमिनिस्ट्रेशन। आप हमारे यहाँ बीकॉम या एमकॉम या मास कम्युनिकेशन में आए हैं, आपको सीखना होगा फर्स्टली एकेडमिक पार्ट, देन द रिसर्च, एक्सटेंशन एंड फाइनली एडमिनिस्ट्रेशन। एक शैक्षणिक संस्था, एकेडमिशियंस चिंता करेंगे दे आर हैविंग दिस प्रोडक्शन यूनिट। एकेडमिशियंस के पास एक ही फैक्ट्री है और कोई कल कारखाना हमारे पास नहीं है। दिस इज द आइडिया प्रोड्यूसिंग यूनिट एंड दिस इज माय मार्केटिंग। यहाँ विचार उपजते हैं और इस तरीके से या बोलने से या तो लिखने से विचारों के अभिव्यक्ति। हमारे बीकॉम, एमकॉम और मास कॉम के विद्यार्थी ध्यान देंगे सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट, अच्छे विचार उपजे और अच्छे विचारों का अभिव्यक्ति हो। आपको खूब बढ़िया लिखने आना चाहिए, खूब बढ़िया बोलने आना चाहिए, और इसीलिए एनईपी में बार बार मौका दिया जा रहा केस स्टडी मेथड, द हार्वर्ड स्टाइल। हमारा विद्यार्थी ये नहीं कि दोपहरिया में खाना खा लिया ऐसा सोया या अध्यापक की बात तो सुना नहीं है, ऐसा टीचर पढ़ाता है खुद को समझ में आता है। हम अपने क्लास को इतना लाइवली बनाएंगे कि हर एक किसी बच्चे को सोने नहीं देंगे, चिंता करना पड़ेगा। अच्छा कपड़ा होना प्रोडक्शन की बात है, और अच्छा कपड़ा होने का हुनर होना मार्केटिंग का। किचन में खाना बनना प्रोडक्शन की बात है, टेबल पे खाना सर्व होना मार्केटिंग की बात है। लोग कहते हैं मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाए, मम्मी को पता है इनको में तेल, इनके में नमक, उनके मसाला, और मेरे से बुद्धों को सादा उबाल खाना वही वाला है, हर एक खुश हो गया। राइट टू अंडरस्टैंड द मार्केटिंग स्किल, द सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट। Therefore, in NLP, we have to focus on the communication skill development of our students. एक आपको खराब डेटा बताने जा रहा हूँ। In our India, universities are more than 1,200. विश्वविद्यालयों की संख्या 1200 से अधिक है, और इस 1200 विश्वविद्यालयों के रहते हुए on one frontier, the quantitative frontier, we are higher, but on the qualitative forum, no one Indian university is prevailing in the best 100 universities of the globe. अगर दुनिया में ग्लोबल रैंकिंग होती है, एजुकेशनल रैंकिंग होती है, हमारा कोई विश्वविद्यालय नहीं आता। जबकि नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला के जमाने में दुनिया के सबसे बढ़िया विश्वविद्यालय हमारे यहाँ। लॉर्ड मैकाले ने ऐसी व्यवस्था किया कि शिक्षा की बुनियाद को कमजोर किया। एनईपी थिंकिंग फ्रॉम लॉर्ड मैकाले टू गुरुकुला। तो मैं आपसे कह रहा था एक भी ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जो बेस्ट 100 यूनिवर्सिटी में आता है। अरे मैं कहता हूँ रैंकिंग गलत है। इंडिया इज बॉदरिंग अबाउट वैल्यू बेस्ड एजुकेशनल रैंकिंग। अगर पढ़ाई तो हो गई और आप में चरित्र नहीं आया, नैतिकता नहीं आई, मानवता नहीं आया, ऐसी शिक्षा की क्या होगा। नाराज मत होइएगा, दिल्ली का एक विश्वविद्यालय बहुत बढ़िया विश्वविद्यालय, सरकार बहुत पैसा खर्चा करती है और वहां नारा लगता है भारत में के टुकड़े होंगे। अगर हमारा विद्यार्थी ऐसे नारा लगाता है तो ऐसे बीए एमए करने वाले जाके अच्छा नहीं है।
अगर देशभक्ति नहीं आई, चरित्र नहीं बना, नैतिकता नहीं आई, मानवता नहीं आया, ऐसा शिक्षा तो मतलब I am very much sure the School of Management Sciences is thinking about value-based education. आपके चरित्र निर्माण में, आपकी राष्ट्रभक्ति, मानवीय पहलू, आज जो चर्चा हुई तो देख रहा था हर आदमी इस बात पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप चिंता करेंगे होलिस्टिक ग्रोथ। तो पहली बात हो गई एकेडमिक। नंबर 2.R रिसर्च। You are aware the degree will be BCom honors with research. It means he or she may be admitted after BCom to the PhD program. Now there is no need of postgraduate courses. Directly you can be admitted to the PhD program. Therefore you will understand the research culture. अभी से आपको सीखना होगा किस तरह से हम अच्छे रिसर्चर बने, अच्छे पेपर, रिसर्च पेपर्स कैसे लिखे जाए। अभी से जान लीजिए अच्छा रिसर्चर बनने के लिए 3 चीजें आना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 RM रिसर्च मेथोडोलॉजी, पॉइंट नंबर 2 QT क्वांटिटेटिव टेक्निक एंड पॉइंट नंबर 3 IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर ये 3 विधा हमारे विद्यार्थियों को स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस ठीक से सिखा दिया जाएगा, he or she will be definitely better researcher। अब रिसर्च के बारे में आपको बताता हूँ। As for the version of ex-HRD minister, presently Minister of Education, Professor Murli Manohar Joshi, Indian researches are acceptable by 0.1% at the global level. 100 में एक नहीं, 1000 में एक रिसर्च को ग्लोबल रैंकिंग में वैल्यू मिलती है। आप ऐसे रिसर्च करते हैं, लिखते हैं आर्टिकल और बताते हैं रिसर्च पेपर। प्राइमरी डेटा पे जाना होगा, एम्पिरिकल एविडेंस लाना होगा, और इसीलिए अब जो सिलेबस हम उनकी कमेटी में थे जो बना हुआ है उसमें जोर दिया गया है किस तरह से आप डिसर्टेशन लिखेंगे, डेटा इकट्ठा करेंगे, एनालिसिस करेंगे, किस तरह से फील्ड वर्क में काम करेंगे। ये सारा प्रयास यहाँ पे किया गया है। थर्ड पॉइंट एक्सटेंशन एक्टिविटीज इन द पोस्ट कोविड एरा आफ्टर 2022 You are having the system of internet। आपकी मोबाइल ज्ञान का भंडार है। वो मोबाइल आपका दुरुपयोग करने को नुकसान भी पहुंचाएगा। मैं उम्मीद करूंगा सदुपयोग करेंगे। आप स्वयं मूक, आपके SMS फैसिलिटी है, ऑनलाइन पोर्टल्स मूक के द्वारा, स्वयं के द्वारा बहुत कंटेंट मिल रहा है, फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है, उसका लाभ उठाइए। इंटायर ग्लोब इज योर्स। एक्सटेंशन एक्टिविटी and finally I am completing with administration, good governance, राम राज्य। ये भी सीखना होगा। हम केवल अच्छे टीचर नहीं बनेंगे, अच्छे हेड भी बनेंगे, अच्छे वाइस चांसलर भी बनेंगे, हम परिवार का अच्छे मुखिया भी बनेंगे। अगर आपके बैंक के द्वारा A ग्रेड दिया गया SMS को इसीलिए दिया गया कि आपके यहाँ बढ़िया से काम हो। नाराज मत होना। अगर गिदड़ों की टीम हो और कप्तान शेर दिन हो तो टीम जीत जाए, और अगर शेरों की टीम हो, कप्तान गीदड़ दिल हो, टीम हार जाए। आपको सीखना होगा। सचिन तेंदुलकर वाज द बेस्ट प्लेयर बट ही वाज नॉट द बेस्ट कैप्टन। धोनी वाज द बेस्ट कैप्टन। भले खिलाड़ी बहुत अच्छा न रहा हो, 20 ओवर के मैच में 19 ओवर तक हार और 20वें ओवर पर अंतिम बार में छक्का मार के मिल जाए। ये सीखना पड़ेगा। As captain of the team, how can you think about turnaround management to convert the loss making into profit making? मुझे बहुत खुशी है कि आपकी संस्था में प्रशासन पर बहुत जोर दिया जा रहा है। These are 4 parameters as per ADP. I am concluding my presentation because I have to go to Varanasi University at 1:30 for some work. सीखना होगा आपको इनोवेशन। आप पूछेंगे इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन इज MAD, मेक अ डिफरेंस। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छतों तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छतों तक जाना है। जिनकी मंजिल आसमां हो उन्हें रास्ता स्वयं है। भाई क्या कह रहे थे फर्स्ट जनरेशन के एंटरप्रेन्योर। अरे मैं तो फर्स्ट जनरेशन का प्रोफेसर बन गई। My father was a primary school teacher। जिस घर में पिताजी प्राइमरी स्कूल के टीचर हो और मुझको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 22 साल में परमानेंट नौकरी में रखी।
कितना कठिन काम रहा होगा पहले दिन जाके पढ़ाना। यहाँ जो बच्चे बड़े भले हैं, इलाहाबाद में हर बच्चा पढ़ लिख के आता, कॉलेज तैयार हो जाता। मैं पहले दिन गया था पढ़ाने के लिए, पूरा तैयारी वाले से गया, पढ़ा के आया, जरा समझ में आया होगा। हर आदमी जब पढ़ाने आता है तो बेस्ट तरीके से ही पढ़ाता है। पढ़ा के आया, मेरे जो सुपरवाइजर थे प्रोफेसर, हेड, डीन, डायरेक्टर, प्रोवीसी, सारे कुर्सी थे। उनका चपरासी आया, बोला साहब बुला रहे हैं। साहब अकेले हो गए, आज मेरी हर दिन तमाम प्रोफेसर हो जाते हैं। मैं हाजिर किया गया, बोले हरेंद्र अच्छा पढ़ाया। मेरे मुंह से निकल गया, सर पूरे जीवन आपने पढ़ाई नहीं किया, पढ़ाई कर। अब अगली बात सुनो, बोले तुम्हारी अंग्रेजी एकदम रैपिड टेक्स्ट थी। मैं आज भी कहता हूँ मेरी अंग्रेजी रैपिड टेक्स्ट ही है। I am sure my English is very poor and my son is quite better than me. क्योंकि मैं जिस दोस्तों से पढ़ के आया था ना, वो आसमान में यही अंग्रेजी। Friends, try to understand. Your weak point is your positive point. ये कमजोरी नहीं है, SWOT को सीखो। SWOT नहीं, TOWS. Strength, weakness, opportunity and threat. Convert into TOWS. Convert the threats into opportunity and weakness into strength. यही चीज है। मेट्रो कंपनी को बहुत बनाया। मेट्रो का नाम आर्टम, मेट्रो नहीं आर्टम, ORT। तो साहब मेरे के लिए गए कि आपकी अंग्रेजी बड़ी कमजोर है। मैं उस दिन ही तय कर लिया, मैं ऐसा ही पढ़ाऊंगा कि अंतिम बच्चे तक पूरी बात समझ में आ जाए। ऐसा किताब लिखूंगा सबको समझ में आए। एक्सपर्ट वही है, एक्सपर्ट वही है जो कठिन चीजों को भी सहज तरीके से समझा देता है। Expert is a person who can teach the complexity in the most useful way. मैं आपसे विनती कर रहा था, आप इस भ्रम में न रहिएगा मैं कमजोर हूँ, मैं गांव से आया हूँ, उसको अंग्रेजी कम आती है। नहीं, it's my strong point. I can do it and I will do it. मुझे बहुत खुशी है, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज को। इस तरह से यहाँ कार्य हो रहा है और अच्छी प्रगति होगी। आज की बात खत्म करने जा रहा हूँ PhD के साथ। नहीं होगा, सफलता के 3 मूल मंत्र हैं। P means patience, H means hard work and D means dedication. अगर हमारे में पेशेंस होगा, हार्ड वर्क होगा और डेडिकेशन होगा तो उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। अल्पकाल में छोटे मोटे पराजय आते ही रहते हैं, बट लॉन्ग रन इज योर्स। बी श्योर, बी कॉन्फिडेंट, सक्सेस विल बी डेफिनेटली इन योर हैंड। But we have to bother about patience, hard work and dedication. I congratulate every student for being the part of the School of Management Sciences. And lastly, I am concluding my presentation by these 2 lines. चिरागों को महफूज कर लो आंखों में, बहुत देर तक रहा। मुसाफिर तुम भी हो, मुसाफिर हम भी हैं, फिर किसी मोड़ में मुलाकात होगी। Blessing our student. It was indeed a pleasure to hear you and your enlightening words. I now request Director Sir, Professor P.N. Jha Sir, to express gratitude by felicitating our chief guest, Professor H.K. Singh Sir, with a shawl and a memento. By presenting a shawl and a memento. Sir, please. Our guest of honor is Sudeshna Basu ma'am.
receiving thanks make both the people blessed, the one who gives thanks and the other who receives. I now invite Dr. V. Pratap Sir, Coordinator Become Honors Program, to propose vote of thanks. Sir, please. Thank you so much, ma'am. Sir was talking about patience. So have little bit more patience. We'll be winding up this session very shortly. So moving on, a very good afternoon everyone. Gratitude is not only the greatest of virtue, but the parent of all others. Respected Chief Guest, Professor H.K. Singh Sir, Guest of Honor C.A. Sudeshna Vasu Ma'am, Rajesh Bhatia Sir, Director of the Institute, Professor P.N. Jha Sir, Registrar Sri Sanjay Gupta Sir, Head Department of Commerce, Professor R.K. Singh Sir, esteemed faculty members and dear students. It is my privilege and honor to propose vote of thanks on this special occasion of inaugural session of Orientation Program 2025 for our fresh batch of MCOM, BCom Honors and BA Honors Mass Comm students. First and foremost, I extend my deepest gratitude to the Almighty Lord Ganesha for His presence. Now I would like to extend my deepest gratitude to our Chief Guest, Professor H.K. Singh Sir, Dean and Head Faculty of Commerce, Banaras Hindu University. Sir, in his deliberation has touched upon so many things. Right from independence India, the moment when we have achieved our independence, the partition, and how over a period of time our economy has changed. Sir has pointed out the three factors, we call it LPG, liberalization, privatization and globalization. Sir has emphasized on many things, but the few of the things to ponder upon, the Sir has rightly said, the life is a journey from human being to being a human. Now, we have learned that we are a human being, but to become a human, it needs a lot of compassion. Sir has touched upon that you need a long-term planning. Until and unless you do a long-term planning, as a student, you have joined this program, so you are not supposed to do planning only for the coming 1 year or coming 2 years or coming 3 years. Here, at the outset of this particular journey, you need to set your goal as well, the long-term goal, whether you want to go for any job opportunity or whether you want to go for any entrepreneurship. So it is up to you. So plan accordingly. Then Sir has emphasized on fair profit. Once you become an entrepreneur, then okay, one of the primary objective is to earn profit, but at the same time it should be fair one. Means you need to earn profit, you need to go for profit maximization after discharging all your responsibilities. Then Sir in his deliberation has emphasized on patience, hard work and dedication. You know, these three elements are the key for any success. You need to have patience, at the same time it should be adequately judicious with hard work and dedication. Then further in his deliberation, Sir has emphasized on area, that is academic, research, extension and administration. Now these four elements include the entire journey of a student. Being a student, you need to inculcate, develop your academics, at the same time research orientation, then extension activity. It's not only about your achievement.
through your achievement, how you are touching life of others. It's all about that. Then coming to the administration. You are not, over a period of time, you need to learn the art of administration as well. And we are proud that here at the School of Management Sciences, we are providing the exposure to all this particular academic, research, extension and administration as well. Sir, your insightful words, blessing have reminded our student of power of knowledge and discipline. As Swami Vivekananda has rightly said, education is the manifestation of perfection already in man. Your presence today has truly inspired us to strive for perfection. Next, I would like to extend my heartfelt gratitude to C.A. Sudeshna Vasu ma'am for her valuable thought. Ma'am, in her deliberation has marked that being a student, you are into the new phase of life, and this journey begins here from today onwards. She emphasized on rapid globalization, technological upgradation. You need to keep pace with changing technology. Then, ma'am also discussed about integrity and ethics. These are the two important elements for any human life. You need to be ethically and integrally sound. Then only you will be able to achieve your dream destination. Moving on, she has also discussed about that being a student of undergraduate, you need to develop a good communication skill. So, I hope you not only develop your good communication skill, but over a period of time, you will build good relationship as well. Ma'am, your journey reflects the perseverance and integrity are the real wealth of your life. Your word has motivated our students to balance academic brilliance with professional ethics. My heartfelt thanks to our guest of honor, Sri Rajesh Vadia sir, National Secretary, Indian Industry Association, President, Small Industry Association, Varanasi. Sir has rightly said that it's a journey of from dependent to independent. You know, all executive position, you are all eligible for the executive position soon after graduating from this institution. It means after completing your undergraduate program, the people they are looking from so much of expectation. So over a period of time, you need to develop not only your technical competency, but you need to be a responsible citizen as well. The sir has rightly said that learning is not an event, it is a lifetime process. The success will not come with degree, but it will come with the skill set which you people are going to develop over a period of time. Sir, your perspective on industry and entrepreneurship has shown our student the roadmap to turn idea into action. As Dr. APJ Abdul Kalam has rightly said, dream, dream, dream. Dreams transform into thoughts and thoughts result in action. Your blessing will guide them on this path. I place on record my gratitude to our director, Professor P.N. Jha sir, for his inspiring leadership and for always being the guiding force behind every endeavor at SMS. Sir, your welcome address has set the right tone for this academic journey. I would also like to take a moment to extend our gratitude to our Registrar Sir, Sri Sanjay Gupta, whose constant support, timely input and helping hand have been invaluable in the smooth organization of this orientation program. Behind every successful event lies strong administration and support, and we are thankful for his guidance and cooperation. A warm thanks to Dr. Shruti Singh ma'am for presenting the preamble of SMS Varanasi.
I am thankful to our Head Department of Commerce, Professor R.K. Singh sir, for enlightening us about the essence of program M.Com, B.Com Honors and B.A. Honors Mass Comm. Your board has instilled clarity and confidence in our new student. I also extend my thanks to Dr. Singh ma'am, our session coordinator, who meticulously conducted this inaugural session with grace and efficiency. A special appreciation goes to faculty members who assisted in today's arrangement: Dr. Sisir Kumar Gujarati, Dr. Ansuman Rana, Mr. C.P. Agrawal, Mr. Anjani Kumar Rai, Mr. Anurag Sahu, Mr. Rohit Singh for their effort during the kit distribution and support throughout the program. I cannot forget to thank my fellow colleague Dr. Ishan Tripathi, Coordinator BA Honors Mass Communication, for always standing by my side, and all others working tirelessly behind the scene from stage management to technical support. And finally, to our dear student, this orientation marked the beginning of a new journey. Remember the word of Ralph Waldo Emerson: do not go where the path may lead. Do not go where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail. May you carve out your own unique journey here at School of Management Sciences. On behalf of School of Management Sciences Varanasi, I once again extend my heartfelt gratitude to each and everyone present here today. Thank you. Thank you so much, sir. With this, we come to the culmination of the inaugural session of two-day orientation program. On behalf of entire SMS family, I sincerely thank the distinguished guests for dedicating their time and enlightening and blessing our new students. I show my heartfelt gratitude to our Executive Secretary, Dr. M.P. Singh sir, Director Professor B.N. Jha sir, and Registrar Mr. Sanjay Gupta, respected professors, faculty colleagues, for their all-round support and their blessings. I finally request you all to stand for the national anthem. Thank you very much. Jai Jai Mangala